Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. For some reasons, I don't know why we are having a slow internet today at Earthquake Engineering Center. However, I have changed the location as well, but and I received a message from a student that the internet is not working. सर बिल्कुल So आज कोई भी डेटा काम नहीं कर रही है और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया भी बिल्कुल ऑफ है, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ ऑफ है। and Wahidullah has sent me a message as well. Wakar has also sent me a message as well that the internet is not working. So how you are connected to the class? We are थ्रू using वाईफाई। Wi-Fi through PTCL. Wi-Fi through so actually so I think सर आवाज आपकी बहुत कट आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही सर। can you hear me? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मतलब बिल्कुल कट रही है सर। अगर आप इसी रूम के साथ कनेक्ट हो जाए तो शायद आपका मसला हल हो सर। Hello Fahim, can you hear me now? यस सर। Yes sir. Okay, anyways, sometimes the Jerome is not working, sometimes the cell phone is not working. Anyways, how about the screen? Screen is visible? Can you hear me, please? Confirm. यस सर, आवाज आ रही है आपकी। Okay, and how about the screen? Is the screen visible? Yes sir. Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Please, Fahim, call me whenever you are unable to hear my voice or the screen is not visible. So today we are going to start or continue our previous discussion on the shear strength of the soil. So in the previous introductory lecture, we tried to emphasize on the importance of the shear strength of the soil and the factors which will affect the shear strength of the soil and the shear strength parameters, that how we can use these parameters in different softwares to perform the geotechnical analysis. Now in today's lecture, our main focus would be to understand the concepts of how we can determine the shear strength of the soil. For example, if we take those two shear strength parameters, C prime and phi prime, say is good, are the effective shear strength parameters, are the undrained shear strength of the soil. So these are the parameters which we need to find out using lab test and also the field test. So in our today's lecture, our main focus would be on the shear strength of the soil using the lab testing. And in today's lecture, we will discuss very briefly on the direct shear test. We will try to go in detail on the triaxial test
and we will go briefly on the simple shear test, and at the end we will discuss few empirical correlations and field applications of different types of triaxial tests. So starting with the simple estimation, that how we can find out the critical state friction angle. So if we simply pour clean coarse grained soil on a horizontal surface, and we will see that this sand will form a kind of angle here that is also known as angle of repose. And for the clean sands, this is known as the critical state friction angle. Now, in order to obtain the shear strength parameters, the reason you always see the direct shear apparatus everywhere, the reason behind that is it's very cheap, it's very simple. We can get fairly quickly the shear strength parameters. So as you remember from your undergraduate studies and from the previous lecture, that a normal load is applied, and when you divide that by the area, it will give us the stress or the normal stress area of the specimen, and we will shear the specimen. Actually, sometimes it's on the lower side, sometimes it's on the upper part of the shear box. So the vertical forces are applied through a metal platen resting on the top plate, and horizontal forces are applied through a motor. Sometimes we use motor as well. For displacement control or by weights through weight pulley system. Then once we shear our specimen, there will be horizontal displacement, vertical displacement, vertical loads and horizontal loads will be measured. The failure is determined when the soil cannot resist any further increment of horizontal force. The shear box apparatus cannot prevent drainage, as we already know that we cannot measure the pore water pressure in direct shear test, and that is the major drawback. The another one is the predefined failure plane. Now, once we perform the direct shear test, we will record the data, and the following shear strength parameters will be obtained, in which we can find out the shear strength at the failure, critical state shear strength, peak or effective peak friction angle, friction angle, and the dilatancy angle, and the undrained cohesion. And that can be obtained when we are performing on the fine grained soil, and the strain rate or the rate at which the specimen is sheared here. The strain rate is very fast, and we are performing test on the fine grained soils. Then we can approximately get the SU as well, which is obviously not accurate one, but it can give you an estimate of that soil. Now, if you want to find out the
peak load which is obtained divided by the area. This will give us the peak shear strength of that soil. How we will obtain the PXP? This is the peak value. For example, it is equal to 100, and if we are having an area of, for example, X, so you can estimate, or even if the area is 10, so we will obtain TP of 100 kilopascal, which is the peak strength of that soil. Now, we can also find out the critical state shear strength by using Px sub Cs, and that is the critical state of this particular material. Now, if you want to draw the volumetric behavior, so for the loose sand, it will be compressive. Excuse me. Loose sand, and for the dense sand, initially there will be compression, and then there will be dilation. The maximum dilation will occur at the peak of the stress strain curve. So this is the point of the maximum dilation. So practically, what does it mean? It means that the soil particles at this peak point will dilate or expand, because those particles were densely packed. So at peak position or point, we will experience maximum dilation, and then it will reach to a critical state, and we define the critical state that the samples are sheared indefinitely at the constant volume. So we can see here, so if you want to write that as change in the volume, so at constant volume the samples are sheared indefinitely. Now, if you want to draw the Mohr Coulomb failure envelope for the normally consolidated clay, so it would look like the bluish line. And if you want to draw the Mohr Coulomb failure envelope for the over consolidated clay or the dense sand, this will be looking like the orange line. And this occurs due to the interlocking, cementation of the sands. Now, the critical state shear stress can be obtained by Px sub Cs divided by the area. So this is the critical state shear strength. Now, if you want to find out the critical state friction angle, we can use the load from the critical state, and we can divide the normal stress which was applied onto this sample. For example, this is the PZ. So this is the PZ which is obtained from this figure, and from the stress strain graph, here is the PX or the X which is corresponding to, or the load which is corresponding to this critical state. We need to use it here. Now, in order to find out the peak
friction angle, so you simply use the peak load and you need to divide that with the vertical load which is exerted on top of that specimen. Now here is the dilation angle, and you can find out the dilation angle using two methods. One method is that you can use this relationship 1, and you can also use this relationship for the peak dilation angle. For example, if we are given with the delta z by delta x, which is the change in height with the change in the horizontal displacement, so if you take the inverse of that ratio, you will get the dilatancy angle. We can also get this dilatancy angle from two failure envelope. For example, this is for the peak Mohr Coulomb peak failure envelope, and this is the I would call that as critical state failure envelope. So if we obtain a friction angle from this line, and this will be the peak one, and this one would be the critical state one. So if we subtract, or if we are dealing with the effective stresses, so we can add the prime as well. So this will also give us the dilation or dilatancy angle. Now, in order to perform the direct shear test, we need a proving ring, a load measuring dial gauge here, a shear box. Okay, we need to put some weights here. A motor is needed to apply the horizontal load or the shear stress to the specimen. A normal load is applied on top of the specimen. This is the top cap, the porous stones to allow the drainage and to have the conditions of the drained condition soil specimen. Load transducers are used, or sometimes the dial gauges or proving rings are also used to measure the loads and displacements. Shearing force is applied using the motor. So the mechanism is shown here. So we are given with two halves of the boxes, the lower and the upper, and the shear force is applied. The soil specimen is prepared inside this specimen, in this shear box. A porous plate, a rough porous plate is placed on top of this specimen. The top cap to apply the load on top of this top cap so that it can be transferred to the soil as a sigma n, which we discussed previously. Now the normal load is applied by weights on the hanger, shear force applied using the electric motor, predefined horizontal failure plane. So here is the predefined failure plane, this point. Area is known, therefore loads easily converted to stresses, so we can convert that to the stress. Shearing force recorded against the horizontal displacement. Stress versus strain or displacement plots can be plotted. Failure is indicated by leveling or dropping of the shear force against displacement. Now, how we prepare the specimen? So simply we have a box here, then we place the lower porous stone, then we place the upper half of the shear box. After that, we need to prepare the specimen, and in order to prepare the specimen, we need to make sure that these two portions are rigidly placed with each other. So the upper half is placed on top of the lower half of this shear box,
So brass screws are tightened so that we will get a fixed, a rigid connection here. Now we will prepare the specimen. Now specimen can be prepared using the ear palpation method. We can also use moist tamping method, and we can also use water palpation technique. Usually these two specimen preparation techniques are used, and the ear palpation samples usually have less strength than the moist tamped samples. Anyways, if you want to prepare the specimen for the clays, so we have a bigger sample, we will bring it from the lab, and if we bring that from the lab, we can place a specimen cutter into the block specimen, the bigger one, and then we can trim that sample, and we will obtain the specimen inside the specimen cutter. Now we will gently remove the specimen into the shear box, and we will place the porous stones and the top cap, and the load will be applied on top of this specimen. Now we need to saturate our specimen. So we will saturate, we will add water. Sometimes we leave it for 24 hours if you want good saturation. Then we bring it to the shear box here, and then we unscrew those brass screws. We also attach the dial gauges. We can add LVDTs here. LVDTs are linear variable displacement transducers, and the motor is also attached to this shear box. We will add the water here to saturate, and then we will put weights here. And once we put the weight, we also apply the shear force with certain strain rate. For example, if you want to run it with 2% per minute or 1% per minute, so it depends that how fast we want to run the test. Now we can note down these readings. We can note down the dial gauges. We can note down the LVDT's readings. We can also note down the shear force and the shear stress readings. We can note all these readings somewhere on the proforma in the lab, and the test will continue until we take all the load or ring dial gauge readings until the peak is obtained at a certain point. Then at that point, for example, the readings are increasing, and then we will reach to this point. And then if we are testing the dense sand, so then when it is leveled off, then we will stop taking the readings.
We can dismantle the setup. Then we can draw the stress strain behavior. Stress strain behavior for different confining stress. For example, sigma 1, sigma 2, and sigma 3, such that sigma 1 is less than sigma 2 and sigma 2 is less than sigma 3. Now we will plot the Mohr Coulomb failure envelope, or the Coulomb failure envelope is enough here. So these 3 points, and then we will join this by best fit line. Here is the shear stress, here is the normal stress. Now we will find out the friction angle. Because it was drained test, then we can say that C is equal to 0, or phi is equal to this much, or C is equal to this much, and phi is equal to this one. Now stress strain curve will look like this for dense sand, and if you want to find out the shear strength at failure, so you can use this equation. Please kindly note down this equation. The maximum shear force at failure, we need to divide that by the cross-sectional area of the shear box. Please confirm that you can hear me and the screen is visible. यस सर नजर आ रहा है और आपकी आवाज भी आ रही है सर. Okay, it's good. Now you can also note down the normal stress, which is the normal load divided by the cross-sectional area of the shear box. Now we need to perform 3 tests, at least 3 tests, to get the best fit line to obtain the shear strength parameters. Okay. Here is an example that the normal load or normal stress is applied in kilopascal, 100, 200, 300, and 400. The total shear stress at failure was 98. So you can clearly see that the failure load is lowest in case of the lowest normal stress. Now then for 200 it is 139, for 300 it is 180, and for 400, for example, if you are increasing the normal stress, for example it's 100, so this sample failed, the sigma n was this much, so the Tri F was 98 kilopascal. Now there was another specimen, and that was confined, or the vertical load was applied 200 kilopascal. That specimen failed at 139 kilopascal. Similarly, it increased as the sigma n increases, the Tri F or at failure will also increase. Then we only simply need to draw 198, I would say 198. So this is the X and this is the Y reading. This is the tau shear stress and this is the sigma n. For the second one, we can say that it's 200 and 139. So we'll get the second point here, 180, 200 and 180. For the third point, it's 300 and 180. And for the fourth point, it would be 400 and 222. So that's how we can get the C cohesion
and friction angle value. One very important thing which you need to remember is that you need to plot this on the same scale. For example, if you are taking the scale of 500 kilopascal, for the normal stress, you also need to take the 500 kilopascal for the y-axis as well in order to get the C and phi. So here the shear strength parameters using the direct shear test, we will obtain C prime is equal to 55 kilopascal and phi prime is equal to 23 degrees. Now you can use these shear strength parameters in various softwares, or even you can calculate the bearing capacity of the soils. You can use in the Zaghi's Mohr bearing capacity equations for foundation designs. Now in another example, now in the previous example it was the stresses were given. Now the loads are given in kilonewton, the strains are given in percentages, the shearing force is given in Newton. These are three normal loads, 0.2, 0.4, 0.8. What we can do first, we can simply draw the load versus strain graph for first test, then we will prepare another specimen, and then we will go for the second normal stress, and then for the third normal stress you will draw the stress strain behavior. Now the load is given, so we can simply use the area of the specimen to calculate the normal stress, and the shear force can also be converted into the shear stress once we divide by the area of the specimen. If we repeat that for the three tests, so we can come up with the shear stress and the normal stress, and once we plot that, we will come up with the friction angle as well. So here in this case we are coming up with phi prime is equal to 25 degree and C prime is equal to 13 kilopascal. Now the effect of density on the shear strength, we discussed in very good detail that how the behavior or the stress strain behavior will look like and how it will look like in the shear stress versus normal stress space. The effect of density on the volumetric behavior and the void ratio behavior. So initially there will be, for the loose sand, we will have the compressive behavior, and for the case of dense sand, we will have initial compression and then we will have expansion or dilation. Similarly, if you want to draw the void ratio for the loose sands, we will have higher void ratio and then this will be compacted and compressed as well, and the void ratio will reduce, for example, to the critical void ratio. Then for the case of dense sand, the void ratios are very, very small. Therefore, if there is a little bit room for the compression, that will occur, but then after that it will dilate or it will expand. Now, conventional triaxial apparatus. This is a very important test which is performed in undergraduate studies in North America and in South Korea, in Japan, all over the world. Triaxial apparatus is being performed and it's been conducted. There are few advantages of this particular device,
and which we are going to highlight in today's lecture, and how we are going to get the shear strength parameters using this apparatus. Usually, this is a biaxial apparatus. I would say sigma 3 and sigma 2. Why some people call it a biaxial apparatus? Because sigma 2 is equal to sigma 3, which is basically the confining pressure. So some people call this device as the biaxial. Now that sigma 1 is basically sigma 3 plus sigma d, and this sigma d is the deviatoric stress, which is sigma 1 minus sigma 3. So during the consolidation stage, sigma 1 is equal to sigma 3 during the consolidation stage of the triaxial apparatus. And then during the shearing stage, it will be different because we need to add the sigma d, or the deviatoric stress. First thing first, we need to know the schematic of the triaxial apparatus. For example, we are given with a rod, ram, plunger, we call it different names. Here we are given with the acrylic cylinder. Okay, this bigger one is the acrylic cylinder, this one, in which we will fill the water. The air valve is used to remove the air bubbles, which are usually present here. So that air release valve is opened to allow or to remove the air bubbles present in the cell chamber. Cell pressure, if we pressurize this water, it will exert pressure, and that pressure is known as sigma 3, or confining pressure. You can also call that confining pressure. O-rings are attached just to attach the membrane. Here is the latex membrane. So O-rings, this is the cross-sectional view, so I can draw the O-rings on top of the bottom pedestal. So this is the bottom pedestal on which we make or prepare the specimen. Here is the specimen. Here we are having the porous discs to allow drainage. Filter papers are also placed above these porous stones to avoid the flow of fine particles in these porous stones. Sometimes to have the good seal between the top cap here, because we need to rotate these rods to the acrylic cylinder so that they are connected. So O-rings are also placed here. What else? Water supply. Okay, water supply can be provided into the
acrylic cylinder, and let me remove here this one. I would add another valve here as well. This is the pore water pressure transducer, from where we will get the pore water pressure information or the readings, or also the volumetric change measuring device. The device can be a pump, which I will show you in a few minutes. And this one is connected to another pump, which will apply the back pressure. So basically, the reading of the back pressure and the pore pressure should be same approximately, based upon the calibration of the pore water pressure transducer, because they are both connected into the specimen. So whatever pressure is present within the specimen, that should be replicated in the pore water pressure transducer, and also the back pressure is applying the back pressure, so it will be replicated in the pore water pressure transducer. Few equations: the axial total stress sigma 1 is equal to sigma d plus sigma 3. So P by A can be also written as sigma d. Now the deviatoric stress during the shearing stage will be sigma 1 minus sigma 3 P z divided by A. Now for the axial strain, any change in height divided by the original height will be equal to the axial strain. The radial strain, so the axial strain in the specimen, so the specimen, so this is the delta z, and here we can see here that this will give us the delta epsilon 3. So delta r divided by r naught. This is the radial strain which are occurring in the specimen. Now, volumetric strain as a whole, how much volumetric change has been occurred, because in drained test, pore water pressure will be dissipated, and it will lead to the volumetric strain or volumetric change. This can be replicated or written using these equations. Now, the deviatoric strain in triaxial apparatus can be found out by this equation, which is 2/3 by the axial strain minus the radial strain. Also, when the sample is sheared, the area will be changed, and we need to find out the corrected area, and the corrected area can be obtained from the original area 1 minus volumetric strain divided by 1 minus the axial strain. Please note down this equation as well. It might help to find out the corrected area in the triaxial apparatus. Now, there are a few advantages for the triaxial apparatus, because it's independently control the applied axial and radial stresses, conduct tests under drained and undrained conditions, control the applied displacements or stresses, which means practically that we can perform the strain control test
or we can also control the stress controlled tests. Now the triaxial test, as I mentioned earlier on, we have a chamber here, the loading system, LVDTs, load frame is here, and if we zoom in on the specimen, this is the specimen. The great advantage is that in direct shear test, we were shearing the specimen on the predefined failure plane. Now in this case, the sample will be sheared, which means the platen will move up, and here we are having a load cell, and the top cap or plunger is placed here. So as we are moving this platen or the pedestal up, this sample will be sheared depending upon the stiffness or the density of the sand. We will experience the failure. Again, the schematic of the triaxial apparatus, displacement transducer to measure the axial displacement, sample, pore water pressure, water supply, cell pressure gauges are there, load transducers. How we perform this test? First of all, we extrude specimen from the Shelby tubes, and we collect the undisturbed sample using the hydraulic jack. Then we will cut this specimen. Usually the height to diameter ratio of 2 is recommended by the ASTM standards, which means that we can either prepare 50 millimeter dia and height of 100 millimeter, or we can go for 35 millimeter, and this is the dia, and height is 70 millimeter. Sometimes people go for dia of 100 millimeter and height of 200 millimeter. So they want to keep that h by d equal to 2. Now we'll prepare the specimen on the glass plate, then we will put few filter papers just to, if we are dealing with the cohesive soils. And why we place filter paper on the cohesive soils? To improve the drainage and consolidation of specimen. We can use the sample former, or the device in which we can apply the vacuum to expand the specimen. Then we can place the membrane, and then we can move the sample former, and we need to place the O-rings so that it can be attached to the bottom and also to the top of the apparatus, or we can call that as top cap. So this is the pedestal.
Here now you can place the cylinder, or some people call that as chamber as well. Then you can place that on the bottom platen. Bring it here. Then we can connect a valve here with the cell pressure. We can also adjust the loading system, load cells. The LVDTs can also be placed. Now we need to place the back pressure as well and the pore water pressure. So we can also place a line here with the pore water pressure transducers. Here we need to connect the back pressure. Here is the back pressure, here is the cell pressure, here is the pore water pressure measuring device. In few labs, pumps are used, and few companies like the GDS, which are the most expensive and most accurate and user friendly, they allow for measuring the volumetric change. So here is the pump. If the pump is going up, it's getting empty. If the pump is going down, the pump is filled with the water. So that's how we can measure the volumetric change in the specimen during consolidation and during drained shearing. So as we put the cell onto the loading frame and we go to the shearing stage, the sample will be sheared at the weakest failure plane. So instead of the predefined failure plane as we were testing in the direct shear test, now we are obtaining the weakest plane, which is more close to the real field condition. Now, as we mentioned earlier on, that the cross-sectional area of the specimen will change, so we can find out the cross-sectional area with this equation. Now, the major principal stress is the sigma 1, and the minor principal stress you can say sigma 3, and this is the confining pressure which is applied during the consolidation stage of the test. Sigma 1 is the sigma 3 plus sigma d, which is during the shearing stage. Now, Excuse me, sir. yes, please. सर ये जो हम अप्लाई करते हैं ना सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जो हम अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली प्रेशर होती है या स्ट्रेस होती है? ये दोनों तकरीबन एक ही चीज है कि हमारे पास लोड पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है। हमारे पास ये काइंड ऑफ प्रेशर मैं कह सकता हूं, क्योंकि वाटर इसके पंप्स के अंदर होता है, और वो जो पंप के अंदर हमारे पास पानी होता है, तो वो एक प्रेशर उस पे एक्सर्ट करता है,
ठीक है। वो जो सॉइल स्पेसिमेन है, जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक सॉइल स्पेसिमेन है, देखें ये वाला। तो जैसे ही हम उसको फिल करते हैं, ये सेल के जो चैम्बर हमारे पास मौजूद होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। यस सर। क्योंकि ऑल अराउंड हमारे पास क्या है, हमारे पास पानी मौजूद है, ये वाटर है। तो जो स्ट्रेस पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेटन अब मूव कर रहा है, जब प्लेटन मूव करेगा यहाँ पे हमारे पास प्लंजर मौजूद है, और अब जब हमारे पास प्लंजर मौजूद है तो ये ऑल अराउंड, बल्कि ये यहाँ से भी सिग्मा 3 ही है। यहाँ पे मैं आऊंगा, बहुत डिटेल में हम इसको करेंगे। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, कंसोलिडेशन होती है। तो कंसोलिडेशन स्टेज में हमारे पास सिग्मा 3 जो है ना वो इक्वल होगा सिग्मा 1 के, या सिग्मा 1 जो है ना हमारे पास सिग्मा 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्टेज 1 है। अब यहाँ पे सिग्मा 3 एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा 3 एक्ट कर रहा है, और ऑल अराउंड सिग्मा 3 एक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। यस सर। Okay, this is isotropic compression. Now when we move towards the step 2, then there is additional stress which is applied due to that shearing of the specimen which is moving up. This sigma 3 will be equal to sigma 1. I hope it clears your question here. So that's why we are interchangeably using, you know, the pressure and the stress, because, you know, in one case it's like a pressure thing, in the another one it's kind of a stress thing which is applied on top of the specimen. Now in case of the consolidation stage, it will be this one, and then you can add during the shearing stage this and this, and this will give us the sigma 1. Now depending upon the density, depending upon the OCR, depending upon the stiffness, we will have experience different types of failure modes in the soil. Based upon my experience, you will see this type of behavior in cemented sands, dense sands, or OC clays, or I would say stiff clays. So this type of behavior of the shearing can be seen. Barreling can be seen in case of loose sands, or we can say that normally consolidated clays. And the barreling and shear behavior can be seen in medium dense sands or lightly cemented sands. Okay. Now if we don't reach to a failure point, then we will take 20% axial strain as the failure point in the stress strain graph. Okay, so if we reach to that 20% axial strain, I would call that as sigma d, yeah, deviator stress. This is the axial strain. Now the triaxial test is by far the most versatile test available to establish the shear strength parameters. There are different test variants which we are going to discuss in a few minutes. Now before going into the details of the unconfined compression test, I want to show you a short introduction which is provided by the GDS Apparatus. GDS is a company which is located in UK, and those apparatuses are very helpful and easy to perform the test as well. They are a bit expensive, and when I was in Canada at Western University, so I was lucky enough to perform and to use the different apparatuses from the GDS
company. So for the case of the triaxial apparatus, the assembly is given, and they have given also an excellent intro, and I will add this to the Google Classroom as well, so you can read in detail that why we perform the triaxial test. So as we discussed in earlier class, in the previous class, that depending upon the location in a slope, we might experience the different lab test conditions. For example, the triaxial extension, triaxial compression, or the Doric simple shear condition in a slope. Now, what does a triaxial test involve? So you can see that there are different types of specimen diameters, so please correct that as well. It's 38 millimeter instead of 35 millimeters, so you can simply multiply with the 2. That would be the height of the specimen then. So the main thing is that you need to keep that height to diameter ratio of 2:1. This is the ASTM standard rubber membrane, and we need to saturate the specimen, and we need to consolidate the specimen, and we need to shear the specimen. We will come to a very important point, which is the sample preparation. Okay. Now, and then it's axially sheared. There are different types of the triaxial tests which are given here. Stress state is also given, that how the axial stress, axial strain, and the sigma 3 confining pressure is applied, specimen height, pore water pressure inside the specimen, axial strain, how they are calculated, how the axial stress or sigma 1 is calculated, what kind of hardware you use. You use the triaxial cell, you use the pedestal and top cap, you need the rubber membranes, O-rings, you need the cell pressure, volumetric controller, back pressure or volumetric controller, velocity control or displacement control, the load frame, internal submersible load cell to measure the loads when we apply the shearing stage, pore water pressure transducers, axial displacement transducers, data acquisition unit, DCS box, this is the DCS box they call that, and a software that you can monitor the loads and displacements and all these things. So particularly it's very handy because of these pumps. The apparatuses which we see around in different university, this phenomena is very complex, but instead of that, you just only need a small pipe here, and if you connect that, that's it. You will measure the cell pressure and you will measure the pore water pressure. If you want to increase the cell pressure, tell this pump that you apply the cell pressure of 100 kilopascal, and you can see and monitor from this laptop that how we can perform, how many stresses we want to apply onto our specimen. Anyways, during the specimen preparation, we have good videos here today to show you about the sample preparation. So these are the rubber specimens, so it's very interesting. You just prepare because it's very difficult to perform and very expensive to perform the triaxial test. So sometimes you need to try a few things on a rubber specimen, and I also did on the rubber specimen, started with this because you will lose lots of specimen and it will waste lots of time from you people. And then a device which is used to apply the suction when we are using the membrane. This is this 3-split mold that you will remove once the specimen is prepared. During the saturation stage, that is a very important stage during the triaxial test. First, we will go through the specimen preparation. Let me write that. Now we will
sample preparation. And again, we can perform moist tamped, or we can air palviate, and in another case we can go for the saturation, and in saturation you can flush it with the CO2, or you can also flush it with the water to remove the air bubbles. Then you will go for the consolidation, and then you go for the consolidated drained test, consolidated undrained test. And if you don't consolidate it, this is unconsolidated undrained test in here. Okay, now how we do the saturation? We slowly increase the cell pressure and we also slowly increase the back pressure, and that will definitely increase the pore water pressure. And this difference is kept very, very small. For example, 5 to 7 kilopascal, just to keep the sample intact and stable. And once you do that, then you slightly apply greater cell pressure, for example 10 kilopascal. So for the time being I would assume that as 100 kilopascal would be the back pressure and 150 kilopascal would be the cell pressure. So cell pressure is 150 and the back pressure is equal to 100 kilopascal. So in order to do the B check, we are given with the two values. For example, the cell pressure is 150 kilopascal and the back pressure is equal to 140. What was the value which we assumed? Yes, it was 100 kilopascal. Okay, it's 100 kilopascal. And this back pressure value is equal to the pore water pressure value, because the pore water pressure and back pressure are coming from the inside of the specimen. So these two values are coming from the inside of the specimen. So they are almost the same. Now for the B check, or for the saturation, what we are going to do, we will slightly increase, for example 10 kilopascal, and we will keep the 10 kilopascal cell, and we will notice how the back pressure or the pore water pressure value varies. Okay, so for example we will slowly increase the cell pressure to 160 kilopascal, keeping the back pressure constant and keeping an eye on the pore water pressure now. So once you do that, so you can use this equation divided by delta sigma 3. So delta sigma 3 is 10 kilopascal, because 160 minus 150 is equal to 10 kilopascal. What is delta U? We don't know. The pore water pressure transducer will tell us how much is the delta U. So if delta U comes up, let's suppose 9.8, then we can say that the B value is 9.8, because 9.8 divided by 10
or we can say it's 98% saturated. So for most soils, for example, for sands, it's highly recommended that we obtain the B value of 0.96 or greater than 0.96. Okay. For cemented sands, because the pores are filled with the cement and ettringite formation and the hydration, it's difficult to obtain the 0.96 or greater value. So sometimes we go for 0.94 or equal to 0.94 or even a bit less than that as well. For clays, it's highly recommended that the readings are greater than 0.97 or 96. But usually if you reaches 0.95, you can continue with the consolidation stage. Okay, that is an important step, very important step in triaxial test, which people usually ignore due to the CO2 application, due to the flushing of the water, because it takes time. I used to apply the CO2 for approximately 30 minutes, 45 minutes, and we will do that from the top and from the bottom as well. And also then we need to flush the specimen, because we need to remove the air present within the specimen. And if you don't remove the air, what we are going to experience that the air present in here will cause significant problem in the second stage. And what is the second stage? The second stage is the consolidation. If the sample is not 100% saturated, you are going to get the inaccurate readings in the consolidation of that specimen. And obviously we are not going to get the good results in the shear testing as well, or shear stage. Now when we move towards the consolidation stage, so the cell pressure is kept constant. Now for example, if we are running the test with the sigma 3, the effective sigma 3 is equal to 100 kilopascal, which means the confining pressure or the effective confining pressure is 100 kilopascal. Now initially the pore water pressure will increase, and then it will try to level off, and that leveling off, which is basically reaching to the initial back pressure value, this is the end of the consolidation stage. Now you can move towards the shearing stage, and that you need to monitor from the software provided by the company. For example, in this case is the GDS. Now UU test, they are typically very fast, and you can reach to the failure criterion or the peak strength within 5 to 15 minutes. The drainage valve is closed and no excess pore water pressure measurement is made in this UU test. However, these two tests are performed widely because they are more accurate, in which the pore water pressure is measured, so they are slow enough to allow adequate equalization of the excess pore water pressures. The valve is closed, but we do record the excess pore water pressure. Now in consolidated drained test, it's slow enough to result in negligible pore water pressure. Now here we need to depend upon the strain rate. If we are shearing the specimen at a faster strain rate, then we are generating the pore water pressure. If the strain rate is higher, the pore water pressure generation would occur. So we need to keep an eye on the pore water pressure transducer, so that the pore water pressure is not generated. Now the valve is open and we record the volumetric change, because the sample is
dissipating, or the pore water pressure is dissipating within the sample. Now in this case, what is going to happen? The volumetric change is going to happen. And we maintain the constant back pressure there. And after that, we move towards the, okay, these are the figures which we obtained. So for example, for the volumetric change behavior, we can see here that is for the loose sand behavior, and for the deviator stress strain behavior is here. And now if you want to measure the pore water pressure, this is the pore water pressure. So the pore water pressure will be positive, as we discussed in our previous class and in today's class as well. So we can also measure the stress path, which will be discussed in very good detail in coming lectures. So stress path and even a little bit touch will be given in today's lecture as well. So that was an intro about how the uh, triaxial tests are performed, why we perform it. I particularly like this uh, this document from released from the uh, GDS company. So I thought maybe it would be good to share it with you people. Okay, so now time to watch a video. Sir, kindly share this document with us. Yes, I will definitely. I was trying to upload this video, but unfortunately, internet was not working at that time. Now I'm going to show you a few videos here, which are related to the sample preparation. So you are please watch these videos from the GDS. I don't know if you can hear the voice or not. Yes, sir, आवाज आ रही है. Okay, so you are able to hear the voice. I thought maybe I need to speak on video, but if you can hear, please kindly focus on the accessories there. So these are the accessories, and the guy is explaining very slowly. So I think so, in detail. So you need to note down, because your term project is on the triaxial apparatus. We need to operate the triaxial apparatus. So please kindly watch these videos which I'm sharing, the documents which I'm sharing, the lectures which the explanation. Main thing is that at UT Peshawar we need to, first of all, we need to repair that apparatus, which is really the triaxial apparatus. And even if we can't repair it, we can perform the test at Jaluzai campus, and we can also perform at different other universities, at the partnered universities. So please kindly watch these videos very carefully, and I will share the links of these videos within the lecture as well. Okay.
सर इस वीडियो में साउंड है कि नहीं सर? हमें तो नहीं सुनाई दे रहा सर। Okay, so if you are unable to hear, there is a sound, so that's what I asked. सर ये सर आवाज आ अगर रही आप लेकिन बहुत ज्यादा वो टक टक की अगर आवाज आप ज्यादा है। सर साउंड तो है वैसे। ओके, अगर आप अब हैंड ये फ्री यूज कर रहे हैं सर तो काइंडली वो रिमूव करें ताकि हमें आवाज आए फिर। मैंने रिमूव किया हुआ था, कोई मसला नहीं है। ये अभी अब इसको टैम्प कर रहे हैं, ठीक है। डिजायर रिलेटिव डेंसिटी को पहुंचने के लिए ये अभी इसको टैम्प कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इसको 5 लेयर्स में करें, कुछ लोग कहते हैं कि इसको आप 10 लेयर्स में करें, क्योंकि हमारे पास 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर की हाइट होती है। तो इसको आप ये कंपैक्ट करते हैं और इससे फिर हम सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग ईयर पल्विएट करते हैं और उसको ड्राई रोडिंग भी बोलते हैं, कि ड्राई रोडिंग के साथ जो है ना उसको, ये ड्राई रोडिंग की टेक्निक से अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट टैंपिंग सैंपल प्रिपरेशन मेथड ये होता है कि कुछ 10% इसमें लैड के मेथड से उसमें आप इसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं बेस्ड अपॉन द वेट ऑफ द सॉइल। तो उसका 10% आप वाटर ऐड करते हैं, फिर उसको आप 10 लेयर्स में या 5 लेयर्स में 2-2 सेंटीमीटर की लेयर में जो है ना आप इसको 5 लेयर्स में कंपैक्ट करते हैं। जो एक्सेस सॉइल है उसको फिर रिमूव किया जाता है। ये स्पैचुला है, स्पैचुला के साथ उसको लेवल किया जाता है। अब हमारे पास डायमीटर जो है ना वो नोन है कि ये हमारे पास 50 मिलीमीटर डायमीटर स्पेसिमेन है, और इसका जो हाइट है वो हमारे पास 100 मिलीमीटर है। तो इसके अंदर जितना सैंड हम डालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये रखें कि कितनी सैंड हम यूज कर रहे हैं और कितनी सैंड हमारी यूज हो चुकी है, क्योंकि उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, उससे हम डेंसिटी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये जो अभी गिरा देता है तो ये नीचे जो ओरिंग्स पड़ी हुई है यहाँ पे बहुत इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फिर लीकेज क्रिएट होती है। ठीक है, जब यहाँ पे लीकेज क्रिएट होती है, आई डोंट नो इफ आई कैन राइट हियर एज वेल, बल्कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक ओरिंग होती है, ये ओरिंग इस पे ग्रीस लगाई जाती है। अब इसके ऊपर आप सेल चैम्बर रखते हैं, कहीं पे भी अगर छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं तो जब आप सेल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, विच विल definitely lead to leakage. Okay, or the leakage will cause the cell pressure will be unable to hold or to create the cell pressure or the confining pressure which you want to exert onto that specimen. सर आप लिख सकते हैं सर, अगर आप देखें सर तो आपकी वीडियो में राइट बॉटम पे सर पिन वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा सर, वहां से आप लिख सकते हैं। I don't know, हाँ तो नहीं रहा। एनीवेज कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, यहाँ पे हमारे पास वैसे ही मैं शो कर रहा था, वीडियो पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर फिर पोरोस्टोन रखा जाता है। पोरोस्टोन से पहले अगर फाइन पार्टिकल्स मौजूद हैं सैंड में तो अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख लें, क्योंकि जो पोरोस्टोन होता है वो क्लॉग नहीं होता, वो ब्लॉक नहीं होता। फिर इसके ऊपर आप टॉप कैप रखते हैं। सर इससे तो फिर एक और हटाया जाता है ना, सिर्फ मेम्ब्रेन और सैंपल रह जाता है। सब्र तो करें, अभी तो आगे क्यों जा रहे हैं, पीछे थोड़ा सब्र करें कि हो क्या रहा है। इससे ऊपर जो है ना ये हमारे पास 3 स्प्लिट मोल्ड है, स्प्लिट मोल्ड को हम हटा देंगे और फिर इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, लेट्स सी अगर वो शो करता है कि नहीं करता। मेरे लिए मुझे लगा कि ये थोड़ी सी जो है ना वो अच्छी वीडियो है। बाकी भी बहुत सारा मटेरियल नेट पे मौजूद है, काइंडली आप जो है ना उसको भी सर्च करें, देखें इसको। वीडियो हमने तकरीबन जो है ना 15 20 30 बार इसको लगा के हमने ट्राई करते हुए जो है ना ये किया है। इस तरह आप सीखते हैं, ठीक है। व्हेन यू सी एंड व्हेन यू डू, ठीक है, देन यू लर्न।
तो इसको कंप्यूटर पे लगा के पेडिस्टल को इस तरह जो है ना वो करके जिस तरीके से फिर पास करके स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना वो हमने सैंपल प्रिपरेशन सीखी कि ये किस तरह हम कर सकते हैं। ओके सर। देखिए अभी ये ओरिंग्स, ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है कि आप जो है ना ये टॉप कैप पे जो है ना रिंग लगाते हैं, अभी एक लगाएंगे या दो लगाएंगे वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप टैंपिंग आपने हार्ड की है तो फिर पंक्चरिंग हो सकती है, और जब पंक्चरिंग हो जाती है स्पेसिमेन मेम्ब्रेन की तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ये होती है कि आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सेल प्रेशर है और पोर प्रेशर है वो सेम हो जाएगा। तो उस केस में आपने करना क्या है कि आपने दोबारा स्पेसिमेन बनाना है, दोबारा टेस्ट रन की करना है, ठीक है। अभी ये बैक प्रेशर जो पंप है ये उसके साथ उसने कनेक्ट किया, ये सारे जो है ना जीडीएस के सेटअप में ये सारे वाल्व जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पोर वाटर प्रेशर के साथ कनेक्टेड है, ये बैक प्रेशर ये भी नीचे कनेक्टेड होता है, सैंपल के नीचे कनेक्टेड होता है। बाकी ये हमारे पास यहाँ पे एक होगा, एक छोटा सा सुराख होता है, उससे जो है ना वो पानी अंदर जो सेल चैम्बर में जो है ना एंट्री होता है वो वहां से एंटर करता है। एनीवेज ये हमारे पास अभी ये सेक्शन अप्लाई कर रहा है। बेसिकली पंप में जो है ना ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको बोले कि -10 kPa अप्लाई करो या -5 kPa अप्लाई करो। अब ये टॉप कैप जो है ना सैंपल के साथ कनेक्टेड है तो ये सेक्शन अप्लाई करेगा, क्योंकि ड्राई रोडिंग पे सेक्शन नहीं होती। अगर सरफेस टेंशन अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स में अगर आप मॉइस्चर थोड़ा सा डालते हैं तो फिर सेक्शन क्रिएट होती है। अब यहाँ पे इसने नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो अप्लाई कर रहा है, पंप को बोलता है कि आप नीचे आ जाओ, थोड़ा सा वो उसको सक करो, जो उसके अंदर जो वर्ड्स में एयर मौजूद है उसको आप सक करो, ठीक है। तो वो सक करता है और सैंपल जो है ना वो स्टेबल होगा। तो अब आप रिमूव कर सकते हैं, इस बॉलर को आप रिमूव कर सकते हैं। ये सैंपल फॉर्मर जो है ना वो हमारे पास हम रिमूव कर सकते हैं। देखें ये अभी फॉर्मर को रिमूव करेगा, और अगर ये सक्शन अप्लाई ना करता ना तो फिर ये सैंपल जो है ना ये मैंने देखा हुआ है कि ये फिर फेल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सक्शन अप्लाई नहीं होती तो ये बहुत लूज होता है। अच्छा ये तो सैंड का आपके पास हो गया, अभी क्ले का कैसे बनाएंगे? क्ले का सैंपल बनाने के लिए आपने ट्रिमिंग करनी होती है, ठीक है। उसके लिए एक दूसरी कंपनी है वीजियोटेक, आई गेस वीजियोटेक ने किया है कि किसने किया है ये, अच्छा यहाँ पे इनके पास है ना वो ट्रिमिंग डिवाइसेस भी मौजूद हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको आवाज आ रही है क्लियर। मैंने हैंड्स फ्री निकाल लिए हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये जो वीडियो की आवाज है। नो सर। सब्र करें, मैं देखता हूं कि कितने लोग वैसे हैं प्रेजेंट। कितने लोग प्रेजेंट है क्लास में? 6 स्टूडेंट्स है सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ वगैरह लोग। यहाँ पे आपने सैंपल लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, बहुत ही थिन और वायर है, वायर से हम कटिंग करते हैं और ऊपर से इसको रोटेट किया जाता है, ट्रिमिंग टूल बोलते हैं इसको। कोशिश ही की जाती है कि सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जो है ना बनाया जाए, और टॉप बॉटम से इसमें हम मॉइस्चर को लेते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट जो है ना तब करता है जब बहुत सॉफ्ट सॉइल होती है, जो क्ले सॉइल है।
या हमारे पास बहुत स्टिफ सॉइल हो। फिर जब बहुत स्टिफ सॉइल हो तो फिर आप नाइफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको सिलेंड्रिकल शेप में लाना होता है, तो कभी कभी वायर काम भी नहीं करता। ये तो बहुत सॉफ्ट सॉइल है। ये मॉइस्चर कंटेंट के लिए फिर आप ले लेते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर से 3 जगहों पर आपने डायमीटर मेजर करना है और 3 जगहों पे आपने हाइट मेजर करना होता है। 3 जगहों पे एवरेज लेते हैं क्योंकि उसको फिर आपने सॉफ्टवेयर में डालना होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मास ऑफ द सॉइल जो है ना आप रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो है ना हमारे पास वेट मास है। फिर हमारे पास जो है ना मेम्ब्रेन डालते हैं। ये जो बैलून टाइप जो है ना वो ऑपरेटस है, ये सक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे पंप से काम लिया गया, यहाँ पे बैलून से काम लिया जा रहा है। आप सक्शन मोटर से भी एक जगह पे मैंने देखा था कि वहाँ पे भी मोटर रखा होता है वहाँ से। तो ये अब जैसे भी इसको आप रिलीज करेंगे तो वो सक्शन अप्लाई करेगा वहाँ पे, और सक्शन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो साइड्स पे लग जाएगा। अब इसके अंदर आप सैंपल डाल भी सकते हैं, या अगर आपने सैंड का बनाना है तो सैंड का बना भी सकते हैं, वो 50 मिलीमीटर होगा। यहाँ पे इसको पोरोस्टोन्स रखने चाहिए थे, लेकिन इसने रखे नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल डिस्टर्बेंस सैंड में जो है ना अमूमन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर ये आपके साथ लग जाता है सैंड सैंपल के साथ, फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहाँ पे आपको दोबारा स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा वाइडर एक्सपेंडर लेना होता है, कि उससे जो है ना आप बॉटम और टॉप कैप पे जो है ना वो ओरिंग प्लेस कर सकें। ये फिक्सिटी प्रोवाइड करता है और अलहदा करता है कि सेल प्रेशर से ये अलहदा रहे। ये हमारे पास एक्रेलिक सिलेंडर है। नीचे जगह को आपने साफ करना है, क्योंकि वो फिर लीकेज का इशू आता है, ठीक है। ये कनेक्टिंग रोड्स हैं, इसको आपने कनेक्ट करना है। स्लोली अब आपने इसको टच करना है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, स्लोली सा टच करना है कि यहाँ पे अपने दरमियान में सेंटर में हो जाता है, तो आपने उसको छोड़ देना है। ये भी टॉप कैप की असेंबली भी डिपेंड करती है, डिफरेंट कंपनीज की, जीडीएस की डिफरेंट है, वीजीटेक की डिफरेंट है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा एयर को डालने के लिए आपने उस एयर वाल्व को ओपन कर लेना है ताकि ये फिल हो जाए। इसके अंदर एक सुराख होता है, और उस अंदर सुराख की वजह से आपने वो जो टैंक है, अच्छा वो जो पानी है ना वो डी एयर्ड होना चाहिए। अगर उसके अंदर बबल्स हैं तो फिर भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अच्छा, एक ये तो हमारे पास हो गया। एक दूसरी वीडियो है वो मैं शो नहीं करूंगा, वो बहुत लेंथी है, ठीक है, तकरीबन एक 50 मिनट की है।
ये इसका लिंक जो है ना मैंने लेक्चर नोट्स में जो है ना वो दे दिया है। लोकली जो अवेलेबल हमारे पास अपरेटिसेस हैं उसमें काफ़ी ये सिमिलरिटी रखती है, ठीक है, जो लोकली अवेलेबल हमारे पास मैट टेस्ट के या इस तरह के जो अपरेटिसेस हैं। तो यहाँ पे इसकी ये हमारे पास वो जो पंप हैं जो जीटीएस के सेल्फ प्रेशर और बैक प्रेशर के जो पंप हैं, ठीक है, एलवीडीटीज है, ये पंप्स की जो है ना वो वॉल्यूम हमें दिखा रहे होते हैं, इस तरीके से वॉल्यूम फिल हो रहा है या वॉल्यूम जो है ना वो एम्प्टी हो रहा है। उसमें सॉफ्टवेयर को भी दिखाया गया है, सैंपल प्रिपरेशन को भी दिखाया गया है। काइंडली इस वीडियो को भी आप देख लें, सॉफ्टवेयर को भी दिखाया गया है। आई विश कि मैं उस सॉफ्टवेयर को की वीडियो मेरे पास डाउनलोडेड होती। तो ये सेल्फ प्रेशर देता है, ये हमारे पास बैक प्रेशर और फॉरवर्ड प्रेशर दिया जाता है। तो इस वीडियो को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप लोग इसको देख लें। अच्छा, मैनुअल जीटीएस की सॉफ्टवेयर की एक वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो थोड़ी सी छोटी भी है और उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको दिखाया गया है कि सैंपल की इंफॉर्मेशन और किस तरीके से प्रोजेक्ट को लिया जाता है और किस तरीके से सेल प्रेशर को, डेटा सेविंग के इंटरवल को कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा सेविंग के लिए लिया जाता है कि आपने 5 सेकंड पे एक एक पॉइंट जो है ना वो डेटा पॉइंट लेना है। तो ये जीडीएस का सॉफ्टवेयर होता है उस, और हर ऑपरेटर्स के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। जिस ऑपरेटर्स पे मैंने काम किया तो वही उसका सॉफ्टवेयर था। हम उसके लिए जो है ना नाम लिखते थे कि ये हमने फॉर एग्जांपल ट्रायल 1 लेना है, फॉर एग्जांपल ट्रायल 2 लेना है। स्पेसिमेन की डिटेल्स अभी आपने इनपुट करनी होती हैं, इसमें हाइट डायमीटर की डिटेल्स होती हैं, किस टाइप का टेस्ट रन करना है, सीयू टेस्ट रन करना है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे, ठीक है, स्पेसिमेन डॉक है, एक टच्ड है या नहीं है, अगर नहीं है तो बस ठीक है रख लें इस पे। इनिशियल हाइट और डायमीटर यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना होता है, सैंपल को नेम करना होता है। रैम्प और प्लंजर जो है ना उसका डायमीटर आपने इंसर्ट करना होता है। आप 0 रख लें, कोई मसला नहीं है इसको। ये बहुत सारी जो है ना वो ऑप्शंस हैं, परमेबिलिटी के, सेट कॉन के, कंसोलिडेशन के, स्ट्रेस पाथ के, ट्राइक्सियल के, एडवांस ट्राइक्सियल के, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड ट्राइक्सियल लेते हैं, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड करना चाहते हैं या अनड्रेन्ड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड। फिर सेल प्रेशर कितना होना चाहिए, टारगेट अभी रिसेंटली करंट कितना है 199 है, इसको टारगेट 200 कर लो। फिर ये कुछ टर्मिनेशन की कंडीशंस आपने देनी होती हैं कि यार मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होना चाहिए, टेस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो कुछ लिमिटेशंस होती है प्रैक्टिस की, तो हम कोशिश करते थे कि हम 35% एक्सियल स्ट्रेन से ज़्यादा ना जाएं। वो डिपेंड करता है कि प्लेटन की लोकेशन किस जगह पे है। मैक्सिमम अगर एक लोड सेल की कैपेसिटी कितनी है तो उस पर भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, या प्रेशर जो है ना वो उससे ज़्यादा ना जाए उस पर भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ना वो टर्मिनेशन की पॉइंट्स हैं या क्राइटेरिया थे। एडवांस लोडिंग की तरफ जो है ना आप जाएंगे फिर, या K0 परमेबिलिटी, सेट कॉन, स्टैंडर्ड ट्राइक्सियल, स्ट्रेस पाथ। ये कंसोलिडेशन स्टेज था, भी हो सकता है शीयरिंग की तरफ चले जाएं। तो ये देखें सेल प्रेशर इसमें कांस्टेंट रखना है या रैंप करना है अपने, स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली आपने इसको इंक्रीज करना है। तो हम रैंप की ऑप्शन जो है ना वो रखते थे। अमूमन हम चाहते थे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना ये रैंप हो, ठीक है। अभी देखें इफेक्टिव स्ट्रेस इसको 100 कर दिया है क्योंकि 200 इसका सेल प्रेशर है, बैक प्रेशर इसका 100 है, तो ऑब्वियसली पोर वाटर प्रेशर भी इसका 100 ही होगा अगर
ट्रांसड्यूसर जो है ना वो ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस 0 है, ठीक है, डेटम पे रखते हैं। फिर एंड ऑफ द स्टेज ऑप्शन हमारे पास आती है, अपने स्टेज को किस तरीके से टर्मिनेट करना है। सेव कर लेते हैं, आप फाइल का नेम कर लें। जब हमने टेस्ट को रन करना होता है वो टेस्ट पे जाएं। जीटीएस सॉफ्टवेयर में ये बहुत अच्छा था कि मुझे सब कुछ नज़र आता था कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है, या हमारे पास टाइम के साथ या स्ट्रेस स्ट्रेन जो बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। कंसल्टेशन अगर स्टेप होता था तो मुझे वो कंसल्टेशन का कर्व जो है ना वो दिखाई देता था रियल टाइम में, और यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते थे कि हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, लोकल एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर की रीडिंग चाहिए, हमें पोर प्रेशर की चाहिए, एवरेज डायमीटर चेंज की चाहिए। काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती थी, इसमें ऑटोमेटिकली हमें ये सारी डिटेल्स आ जाती थी। तो ये रियल टाइम में हमारे पास रेडियल स्ट्रेस, बैक प्रेशर, लोड सेल की रीडिंग कितनी है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किस किस पैरामीटर्स के साथ या कौन कौन सा जो है ना हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस पे कौन से पैरामीटर्स हमें चाहिए, तो उसको भी हम चेंज कर सकते थे। डायनामिक टेस्ट अगर हमने रन करना है तो ये सिनुसाइडल जो है ना वेव है, सिनुसाइडल वेव इस पे अप्लाई करते थे और वो हमें एक्सियल डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम भी जो है ना वो दे देती थी। तो ये तो खैर डायनामिक है, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रीवियस स्टेजेस हैं वो सब में सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, टू द लेक्चर, ठीक है। अब हमारे पास वीडियो से और कुछ डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है, ट्राइक्सियल के। लेकिन ट्राइक्सियल को टेस्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करने पहले, उससे पहले हमने एक टेस्ट को डिस्कस करना है जिसको कहते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन। अनकन्फाइंड कंप्रेशन जो है ना वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमारे पास कन्फाइनिंग स्ट्रेस, हमारे पास जो सिग्मा 3 है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। जब हमारे पास सिग्मा 3 0 होगा तो सिग्मा 1 लोड पर यूनिट एरिया हो जाएगा, और हमारे पास सिग्मा 3 0 है तो इसका अगर हम मोहर सर्कल ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास स्टार्ट कहां से होगा, सिग्मा 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हमने अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो सिंपली हम इससे अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हाफ ऑफ द, या मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ द डायमीटर होगी। ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लें जो कि आपने अंडरग्रेड में भी इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। करेक्टेड एरिया अगर आपने इसके फाइंड करना है तो करेक्टेड एरिया के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, अब अनट्रेंड या अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस्तेमाल कहाँ पे होती है? देखिए, ये हमें शॉर्ट टर्म बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल्स फॉर द फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। We need to compare the shear strength of the soils from a site to establish soil strength variability quickly and costly. Now, if we are only interested in, just to compare that how much is the strength of the soil in this particular site, so we can quickly perform, it's because it's cheaper and it's cost effective and quicker as well. So we can perform the unconfined compressive strength in the lab. We can also determine the stress strength characteristics for the fast undrained loading condition, because we are running the test
pretty much fast. That's why we are naming it as undrained test. Now there are other tests available as well, like unconsolidated undrained test and consolidated drained test. For example, let me erase this one. So unconsolidated undrained test, consolidated undrained test, and consolidated drained test. Please note down that there is a word here, I. In a few books you will see that I, and that I represents that it's the isotropic compression. Okay, so isotropically consolidated undrained test, isotropically consolidated drained test, but simply you can write UU or CU and CD because we already know that we are talking about the triaxial test. That's why we can simply write UU, CU or CD test. Now, broadly speaking, we will say that we are going to first consolidate and then we will shear. But in unconsolidated test, we only just increase the sigma 3 and delta Q by delta P, or we can say Q by P equal to 0, which means that there is no deviator stress applied on top of this specimen. But when we go to the shearing stage, we can clearly see that delta sigma 1 is greater than 0 and delta sigma 3 is equal to 0. Now in this case, delta Q by P or the Q by P will be equal to 3, and this will give us the stress path which we are going to see in here. So sigma 3 is equal to, we will first apply the sigma 3 and delta U is not equal to 0, and then in the shearing stage sigma 3 is applied, but we will add the deviator stress, and this sigma 3 plus sigma 1 will give us the sigma 3 plus sigma d will give us the sigma 1. Now so far we have discussed about the stress strain behavior and the pore water pressure or the volumetric behavior. Okay, like this or like this something. There is another type of behavior which is known as the stress path, like how the stresses follow the path in this particular drainage condition or in this particular test. So based upon research, this will give us a total stress path having x equal to 1 and y or the slope equal to 3. Okay, so that's why Q by P is equal to 3. So Q is equal to 3P. Please note down this equation, it's very important. Now if we want to draw the Mohr circle, so we can draw the Mohr circle, for example at sigma 3, let's suppose if it's 100, and then you will shear the specimen and you will reach to the sigma 1, and this sigma 1 is 100 plus sigma d, which is basically the diameter of Mohr circle. Okay. Now we can also perform another sigma 3 at, let's suppose 200 kilopascal, but we have not allowed
the specimen to consolidate. Therefore, if you see here, the sigma d, or the diameter of this Mohr circle, is almost the same. Why? What's the reason? I need a short discussion here, please. Wait. Okay, let me slow down. This was too high to my ears. Okay. Yes, please, name and your explanation. हजरत बिलाल सर. Okay, Hazrat Bilal. सर असल में ये इसमें तो ये यूयू टेस्ट में हम कंसोलिडेशन अलाउ नहीं करते ना, यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन नहीं होती तो सैंपल की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास जो हम सिग्मा डी डिविएटिक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो वही एक्चुअल डायमीटर के सैंपल के डायमीटर पर भी अप्लाई होगी, और उसमें यहाँ पर हमारे पास उसके डायमीटर में कुछ चेंज नहीं आएगी, वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आएगी. So what happens if we are not changing the volume, or if we are not consolidating the specimen? What happens? होता क्या है अगर उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं, या उसको जो है ना हमने वॉल्यूमेट्रिक चेंज के लिए छोड़ा नहीं है स्पेसिमेन को, एक्चुअली हो क्या रहा होता है विद इन द स्पेसिमेन? सर ये यूयू टेस्ट में तो फिर हम पोर प्रेशर को कंसीडर इसीलिए नहीं कर रहे हैं ना, पोर प्रेशर तो हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली कन्फाइनिंग स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं सिग्मा 3, उसी ही से हमारे पास सैंपल को फेल किया जाता है और डिविएट्रिक स्ट्रेस फाइंड किया जाता है. एनीवन एल्स? कंसोलिडेशन या वॉल्यूमेट्रिक चेंज, एक्सीलेंट, थैंक यू हजरत बिलाल, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन एक वर्ड या एक जो है ना सेंटेंस है जिसको अगर बोल दिया जाए तो फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी. वो क्या है? ये तो वैसे आपने अंडरग्रेड में भी पढ़ा हुआ है. यूयू टेस्ट, और काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है. हलीमुल्लाह खान, आतिफ, फहीम, वहीद, तहरीम, एनीवन? यूयू टेस्ट में हमारे पास डिविएटर स्ट्रेस क्यों इंक्रीज नहीं होता? हजरत बिलाल, जी सर. क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होता. अगर हमने उसको कंसोलिडेट होने के लिए छोड़ा होता कि कंसोलिडेट हो जाता तो वो जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं वो इंक्रीज होते. अगर वो इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होते तो उसकी वजह से उस सैंपल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती. इसलिए अभी जब हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो अगर आप यहाँ से देखते हैं इसको, तो बेसिकली ये अगर हम जितना भी इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज कर लें, तो चूंकि हम इस सैंपल को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये जो पोर वाटर प्रेशर है डिसिपेट करे, और पोर वाटर प्रेशर अगर डिसिपेट करेगा, अगर ये डिसिपेट करेगा तो हमारे पास एक फेमस तिरज़ागी की इक्वेशन है कि सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू. अगर ये यू डिसिपेट नहीं होगा तो कैसे जो है ना हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा? अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो ही नहीं रहा तो देयरफॉर हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है यूयू टेस्ट में वो सेम रहती है. समझ आ गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल. Good. Okay. Now we will also perform, in order to find out the undrained shear strength of the soil, using the unconfined compressive strength, vein test, field or lab. On the field test, we will talk in the coming class. Quick undrained test, which is the UU test. Okay, how we can find out the undrained cohesion. So the unconfined compressive strength setup looks like this, and the unconsolidated undrained test, which is a quick undrained test setup, looks like this.
एक्सक्यूज मी सर। Yes, please. सर ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है ये तो सिर्फ क्ले सॉइल के लिए हम एप्लीकेबल है ना? Yes. Yes, क्योंकि इसमें because तो हम yeah, you are right. It's impossible for the loose sands, but it's possible for the cemented sands. Okay, if we prepare a cemented sand in a PVC mold, for example, and I have done the research on this as well. So if we, and the Japanese have also performed this. For example, now it's impossible to hold these sand particles, but if we put 3% to 2% cement inside, then these particles will have cementation in between. And if we remove this PVC mold, then the sample will hold like this. Now you can put it into the unconfined compressive strength. But yes, I agree, in case of sands, it's difficult and impossible to perform the unconfined compressive strength test. And it is only used for the cohesive soils. Now for the quicksand, how we are going to use the cell pressure? We will apply the cell pressure. We will set the strain 2% per minute, because we don't worry about the pore water pressure. Therefore, the pore water pressure is not here. Therefore, we don't worry about the back pressure as well. So this is the U test. It's a quick estimation of this strength of the sample. The procedure is given here. Then we will draw the stress strain behavior. Note down the readings there. And we can draw the Mohr circle. Undrained friction angle is equal to 0, and 0 to, I guess it's 180 or something, 188, I guess it's 188 kPa. So if we divide 188 divided by 2, it's 94. So the SU would be 94 kilopascal. And we can also find out, this is the sigma 3 and this is the sigma 1. And if we subtract sigma 1, how much is the sigma 1? It's approximately 288, minus 100 is the sigma 3. So 188 would be the delta sigma R. Sigma D is equal to, the deviator stress is equal to 188 kilopascal. Okay, and that's what is written here as well. Now there is an example that cell pressure is 100 kilopascal and the sigma D is 188. This is sigma 3, this is sigma D, and phi u is equal to 0. We need to determine the value of additional axial stress that would be required to cause failure of a further sample of the soil if it was tested undrained with a cell pressure of 200 kilopascal. So sigma 3 is 100 kilopascal, sigma 1 is, sorry, this is the sigma 1, which is the 188 is the sigma D, and this is the sigma 3. Okay, so if we add these two, this will lead to the sigma 1. So 288 is basically sigma 1. Now phi u is equal to 0. We can clearly see that sigma 3 and this is sigma 1. Now this is sigma 3 and this is sigma 1. But if you see here, the diameter of these two Mohr circles are almost the same. And the reason behind that was explained by Hazrat Bilal, that there is no consolidation is occurring in this specimen, no volumetric change is occurring, and I added that no change in the effective stress is occurring. That's why the sigma D is
almost the same in case of UU test. Okay. Now we can find out the CU, which is the undrained strength of the soil. Shear strength of the soil is 94 kilopascal. There is another short example, and that's how we can find out the undrained shear strength of the soil. Now, we have seen that we can find out the CU from the triaxial test. Now, we can also find out the effective shear strength parameters from triaxial test as well, using the consolidated drained test and consolidated undrained test. So we will stop today here. We will give you some time for the question and answer, but before going into the question and answer session there, we will explain the term project and also the assignment, which is related to the sample preparation. Let me see if I have here. So you might have seen the term project somewhere. Yes, here. Please confirm that you can hear me and the screen is visible. Yes, sir. Yes, आवाज आ रही स्क्रीन। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप थोड़ा सा सर पीछे कर लें क्योंकि रमज़ान है, तो मिड और फाइनल के दरमियान जो वीक आ रहा है वो डेट जो है ना हम देख लेंगे। तो मिड और फाइनल के दरमियान जो हमारे पास वीक आ रहा है, हमारे पास वैसे नोटिफिकेशन तो मौजूद है, चलिए ये चीज़ मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो मिड और फाइनल के दरमियान जो वीक आएगा उसके एंड पे आपने इसको सबमिट करना है। ये हमारे पास एक टर्म प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक रिपोर्ट लिखें, ठीक है। उसमें एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें लिटरेचर रिव्यू होनी चाहिए, मटेरियल्स एंड मेथड्स, किस मटेरियल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस उस पे होनी चाहिए, कंक्लूजन्स और रेफरेंसेस और अपेंडिक्स अगर आपने उसके अंदर डेटा वगैरह शेयर करना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बेसिक जो टेक्निकल की कैरेक्टराइजेशन आप करेंगे जिसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल बेसिक जो टेस्ट हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के, परमेबिलिटी के, मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो के। अच्छा, अब मिनिमम वॉइड रेशियो आपने कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए हमने एक सेटअप बनाना है जो कि मैंने वली को ऑलरेडी एक टास्क दिया हुआ है कि उसकी कॉस्ट को जो है ना वो प्लीज आप पता लगा लें। हम कोशिश करेंगे कि जियोटेक लैब को थोड़ा बहुत जो है ना वो सपोर्ट भी करें, तो इसमें अगर हम थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो अगर आप स्टूडेंट्स की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी, टोटली जितनी भी होगी, अगर फॉर एग्जांपल वो खर्चा जो है ना हमें वली बता देंगे तो हाफ जो है ना वो स्टूडेंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हाफ जो है ना वो मैं अपनी तरफ से जो है ना वो कंट्रीब्यूट करूंगा, ताकि ये एक अपरेटस जो है ना वो सॉइल मैकेनिक्स लैब को मिल जाए और वहाँ पे हम हमें नस्ट अपने सैंपल्स ना भेजने पड़े या किसी और जगह पे हमें इसको ना भेजने पड़े। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये अपरेटस हम यहाँ पे, ये एक वाइब्रेटरी टेबल है, देखते हैं कि वो कितने का मिलता है। अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो फिर ऑब्वियसली हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चीज़ को हम परचेज कर सकें। हमने इस पे ऊपर 3 ओडोमीटर टेस्ट रन करने हैं जिसपे हमने लोडिंग भी करनी है और अनलोडिंग भी करनी है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो वर्सेस जो है ना हमारे पास लॉग ऑफ स्ट्रेस में कर लूंगा कि हमारे पास वो कर्व आ जाए। 3 कंसोलिडेटेड सीडी टेस्ट जो है ना वो हमने सैंड पे करना है, सैंड वली से आप ले सकते हैं, और 3 जो है ना हमने कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट करने हैं जिसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर भी ड्रा करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिहेवियर भी करना है,
और deviator stress और effective mean stress का behavior भी ड्रा करना है. We also need to draw the Mohr circle and we need to obtain the shear strength parameters, for example in consolidated drain case C prime and the phi prime as well. Same here, only thing is that we need to find out the excess pore water pressure behavior. We need to draw the Mohr circles and we need to obtain the C and phi from the CU test, and from here we are finding the CD test. There are few notes which are here. We need to use the moist tamping sample preparation method to prepare samples. Now, this is the moist tamping method. So I was thinking about, that how you will know that what is the moist tamping method. So it's better to do a little bit of the literature review on different sample preparation method, and that's why I included assignment number 1, and I will add this assignment as well. Now here we need to do literature review or explain various sample preparation methods. For example, the moist tamping, how 10% of water content is added to the sample, and how then tamping is done in 5 layers or 10 layers. For the air permeation, how the air permeation is done, water permeation for preparing triaxial specimen. So it will be having 1 mark. So basically we are having assignments 10 marks, 10%, and quizzes 10%. So please do not consider a single 1 mark that it's not important, because it will eventually reduce your A to a negative and a negative to B plus. So please do not take this 1 mark casually. Okay, so then you need to explain the procedure for finding the Skempton's pore pressure parameter B, which we explained today as well a little bit, so you can go a little bit deeper into it. And this is due to the saturation stage. And what is the significance of the back pressure? So I would say this is having 1 by 1 mark. This is 0.5 by 1 and 0.5 by 1. So you need to add that as well. What is the Skempton's parameter? A parameter. And I will give you the hint here that during the shearing stage, this is the A parameter. Okay. These informations are important when you are going for the term project, if you are running the tests. Okay. So excuse me. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Wait, let me complete. See, sir. Okay, almost there. Then we will go for the discussion. Now, samples in performing the triaxial test should be prepared at the relative density of the 60%. Now, in order to perform the relative density, now how we find out the relative density? What is the relative density? What is the relative density? Wali, what is the relative density? Relative density loves जो ना उस simply हम जो ना किसी range मतलब फर्क करें maximum density की कितनी परसेंट जो ना हम compactness या फाइल को उसको relative density ठीक है सिर्फ मैक्सिमम की सिर्फ मैक्सिमम के साथ करते हैं हम ये नहीं साइल की कंसेप्ट में जो हम मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो रेंज है ना अच्छा ठीक है अभी जो है ना हमारे पास वोली ने सही आंसर दिया है कि हमारे पास ये इस तरह है कि हमारे पास ये एक रेंज के दरमियान फॉल करेगा और वो हमारे पास है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम ठीक है ये हमारे पास फील्ड की रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी ये हमारे पास मैक्सिमम वॉइड रेशियो हो जाएगा वॉइड रेशियो
मैक्सिमम वॉइड रेशियो, जो कि करिस्पॉन्ड करेगा मिनिमम डेंसिटी के साथ। ये हमारे पास मैक्सिमम, ये तो ठीक है, ये तो सेम है। मिनिमम जो वॉइड रेशियो है ये करिस्पॉन्ड करेगा किसके साथ? मैक्सिमम डेंसिटी के साथ। अब इस मिनिमम वॉइड रेशियो को फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास प्रॉक्टर मोल्ड है वो लेते हैं और उसके ऊपर कुछ वेट रखते हैं और एक वाइब्रेटरी टेबल होता है। अब हमारे पास एक ये एक्सक्यूज मी, ओके, मोल्ड लगते हैं। मोल्ड की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास नोन होता है, उनके डायमीटर और हाइट उसका नोन है। फिर उसके ऊपर हम सैंड डालते हैं, तो वो भी हम एक जितनी अमाउंट डालते हैं और जितनी हमारे पास रह जाती है तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं तो उससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। एएसटीएम स्टैंडर्ड कहता है कि इसके ऊपर आपने कुछ वेट्स रखने हैं और इसको फिर खास फ्रीक्वेंसी के साथ आपने ये वाइब्रेट करना है। ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब ये डिवाइस वाली ने पता लगाना है कि ये कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी। अगर इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल जो है ना हमारे पास आती है 10,000, तो 5,000 स्टूडेंट्स पे कर लें और 5,000 जो है ना वो मैं पे कर लूंगा अपनी तरफ से। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है तो फिर हम जो है ना इस तरह करते हैं कि चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटअप है विच वी नीड, क्योंकि ये हम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ पर रुजू करते हैं और वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बाकी फिर हमारे पास और क्या आता है? रिलेटिव डेंसिटी हो गई है। बी वैल्यू मैंने बता दिया कि बी वैल्यू मिनिमम कोशिश करें कि हमारे पास बी वैल्यू 0.92 आए ड्यूरिंग those tests. Please add the data in the appendix so that we can see that the test was performed there and how and where the error is occurring. The suggested back pressure value is 150 kilopascal. Now we can perform for 50, 100 and 200 kilopascal of the effective stress. So we can say that if this is the back pressure value, which is 150, then the cell pressure for the first case would be 200, and the cell pressure for the second case it would be 250, and the cell pressure for the third case it would be 200, so 350, okay, kilopascal. Now date collected and calculation for each should be shown in the appendix. You can show the data calculation there. Sample if you need, you can contact Wali there. Tentatively these groups are made 1, 2, 3, 4 and 5. Other students are coming. This place is vacant here. Anyways, this is the assignment and the term project. That's all from my side today. If you want to ask any question regarding related to the lecture, related to the assignment, related to the term project, you are free to ask. I was hoping to finish it till the triaxial test. I don't know where we took a little bit more time. So I thought maybe we will leave this consolidated drained and undrained compression for the next lecture, and then we will also touch on the field tests as well. So thank you very much for listening very patiently, and thank you for your kind participation as well. If you want to ask any questions. Okay, and let me take the attendance there. Who is absent? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Excuse me, sir. Yes, Shahid, please. सर मैं मोहम्मद सुमेर शायदुल के साथ क्लास ले रहा हूँ कंबाइन, तो सर मैं अटेंडेंस लगा दी। अच्छा, सुमेर आप प्रेजेंट है, मैं तो आपको एब्सेंट लगा लिया यहाँ पे। नहीं सर, मैं प्रेजेंट हूँ, इधर क्लास ले रहा हूँ, इकट्ठे ले रहे हैं हम। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। सही है, आप एब्सेंट प्रेजेंट है, चलें ठीक है। एनी क्वेश्चन? वली कोई क्वेश्चन है?
कि नहीं है? यस सर। सर ये मिनिमम मैक्सिमम वाइड रेशियो डेंसिटी, हाँ एक तो ये कि हम जब मोल्ड में फर्ज करें मोल्ड लेके आते हैं और ये वाइब्रेटर लेके आते हैं, तो वही मोल्ड जो ना वो तो बड़ा मोल्ड है ना, जो एसपीटी का मोल्ड है, ठीक है, या सीबीआर का मोल्ड है, वो तो हमारे साथ बहुत बड़ा मोल्ड है। लेकिन ट्रायक्सियल हाँ सैंपल तो बड़ा होता है, तो इसमें जो ना वो ये डिस्टर्बिंग भी मतलब आ जाएगी कि जब हम उससे सैंपल लेते हैं ट्रायक्सियल के लिए। और दूसरी बात ये सर कि हम क्या इस तरह कर सकते हैं कि ये सैंपल को, ये ट्रायक्सियल का जो मोल्ड होता है ना ट्रायक्सियल सैंपल प्रिपरेशन का जो एक छोटा सा मोल्ड होता है, स्प्लिटर होता है, क्या नाम उसको कहते हैं ना सर, हाँ तो उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मतलब मेरे जहन में वैसे एक आइडिया है, शायद ये शायद दिल्ली के आपका फैसला से आइडिया शायद। बिल्कुल ठीक है। देखें, आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो है ना वो हमारे पास है एएसटीएम का, जो मोल्ड हम बड़ा मोल्ड लेते हैं जो हम प्रोक्टर या मॉडिफाइड प्रोक्टर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसकी एक डायमेंशन है, उतना मोल्ड होता है, ये एएसटीएम का स्टैंडर्ड है। उसमें आप लूजली सैंड डालते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ना लूजली, ठीक है, उसमें आप लूजली सैंड डालते हैं जिस तरीके से आप ईयर पल्विएशन करते हैं। एयर पल्विएशन के थ्रू आप डालते हैं, उसके ऊपर आप वेट रखते हैं, आपको एक नॉन मास होता है और उसके नॉन वॉल्यूम के अंदर होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से आपको डेंसिटी मिल सकती है। ये एएसटीएम का मेथड है जो कि आप क्या करते हैं, इसको आप एक वाइब्रेटरी टेबल पे रखते हैं। दूसरा जो जापानीज इस्तेमाल करते हैं, जो कोरियंस इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बहुत ही छोटा सा, मैं अगर आपको रफली थ्रो करना चाहूँ, एग्जैक्ट डायमेंशन मुझे याद नहीं है, तो अगर मैं कहूँ कि यार ये जो है ना 35 बाय 70 का जो ट्राइक्सियल का स्पेसिमेन होगा, 50 बाय 100 का नहीं, 35 बाय 70 का जो, या 38 बाय 76 का जो है ना हमारे पास स्पेसिमेन का मोल्ड होगा, उस मोल्ड में अंदर आप उसके अंदर डालते हैं, उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं और उसको टैप करते जाते हैं, ठीक है, उस हथौड़े के साथ उसको टैप करते हैं। ये है जापानीज स्टैंडर्ड। अब हमारे पास जब इशू आएगा वो ये आएगा कि अगर हम उसको पब्लिश करते हैं, इस काम को पब्लिश करते हैं, तो फिर हमारे पास वो इशू ये आ जाता है कि फिर हम एक में कहेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो है वो एएसटीएम स्टैंडर्ड इससे फाइंड की गई है, और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो मिनिमम वॉइड रेशियो है ये हमने इससे फाइंड की गई है। या अगर हम कहेंगे ट्राइक्सियल से कहें तो वो कौन सा स्टैंडर्ड है कि वो हमें अलाउ करेगा, क्योंकि यू नीड टू बैक योर डेटा विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड, ठीक है, a certain work which has been done in the previous past few years। तो ये जो है ना, अगर ट्राइसेल में आप डाल के, मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि यू नीड टू कंपैक्ट इट। उधर एक दूसरा इशू आता है पार्टिकल क्रशिंग का, कि आपने पार्टिकल क्रशिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पार्टिकल क्रशिंग कर लेते हैं तो पार्टिकल क्रशिंग की वजह से जो वॉइड स्पेसेस है वो चेंज होंगे, और आपकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज होगी, और आपकी वॉइड रेशियो भी चेंज होगी। सो एएसटीएम स्टैंडर्ड या जापानीज स्टैंडर्ड जो आपको कुछ लोडिंग की कंडीशन देते हैं या कुछ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसीज देते हैं, वो आपको इसलिए देते हैं कि आप जो है ना वो पार्टिकल क्रशिंग ना करें, या आप एक्सेसिव जो है ना वो डेंसिफाई भी ना करें कि आप उसको पार्टिकल्स को क्रश करने की तरफ चले जाएं। जी सर। सर हाँ, आवाज आ रही है, बोलें प्लीज। सर ये एक ये जो पल्विएशन है ना सर, ये तो मतलब ड्राई सैंड वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, तो हाँ, हम तो 10% मॉइस्चर डाल देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तरीके तो हमारे साथ फिजिबल नहीं होगा पल्विएशन का, पल्विएशन का कहाँ पे फिजिबल नहीं होगा? क्योंकि हम 10% मॉइस्चर डाल देते हैं ना, और पल्विएशन तो ओनली ड्राई सॉइल में सर जी पॉसिबल है। तो एयर पल्विएशन एक अलहदा टॉपिक है, ठीक है, और एयर पल्विएशन के थ्रू जो है ना, ये आप कहाँ पे इमैक्स मिनिमम की बात कर रहे हैं या ट्राइक्सियल की सैंपल की बात कर रहे हैं? सर असल में मैं जो ना उसको कंबाइन करता हूँ, फर्ज कर हमने फर्ज कर ई मिनिमम मैक्सिमम मालूम कर दिया ना, तो वो आपने एयर पल्विएशन के थ्रू करना है, सही सही सर। उसमें आपने मॉइस्ट नहीं करना। आपने ट्राइक्सियल का सैंपल जब बनाना है तो वहां पे जो है ना आपने मॉइस्ट टैंपिंग के, एयर पल्विएशन के अपने मेथड्स हैं। यहाँ पे एएसटीएम स्टैंडर्ड जितना मुझे याद है, ठीक है, जितना मैंने उस पे किया है, वो आपने एयर पल्विएशन ही इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर लोड रखना है, और फिर जो है ना बेस्ड अपॉन, मुझे नहीं याद कि उसमें कोई मॉइस्ट टैंपिंग का जो है ना वो मेथड जो है ना वो वहां पे गिवन था जब मैंने उसको परफॉर्म किया था।
और सर एक और तरीका वैसे ज़हन में आ गया है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, शायद जो ना वो ये दोस्त मेरे साथ हेल्प करे और अच्छा भी हो सर। गुड। सर ये जो हमारे साथ एक रिलेशन है सर जी हाइट का, ठीक है, मतलब सैंपल के हाइट का जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, और ई मिनिमम या ई मैक्सिमम कोई वाइड रेशियो, मतलब एक रेंज होता है ना, उसमें एक हमारे साथ बिल्कुल। इक्वेशन है। हम हाँ कंसोलिडेशन में वो इक्वेशन यूज करते हैं सर ये यूजुअली। बिल्कुल। तो हम ये जो ट्राइएक्सियल सैंपल प्रिपरेशन का जो मोल्ड होता है ना, हाँ तो उसमें हम साइल को डाल लें, ठीक है, ई मिनिमम मैक्सिमम तो फर्ज करें हमने मालूम कर लिया है ना, ठीक है। और तो उस पे हम लोड अप्लाई करें और जो हाइट चेंज है वो मेयर करें ना, तो उससे हम जो ना वो मेरे ख्याल में हम डेंसिटी अचीव कर सकते हैं हर एक रेंज के लिए सर। बिल्कुल इसी तरह ही है वली, इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है। हाइट पे जो है ना वो काफी रिसर्च हो चुकी है कि हाइट ऑफ फॉल जो है ना वो आपको जो है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो ज्यादा जनरेट करता है। और अगर जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करते जाते हैं, और रिसर्च कहते ही इसको है इस पे, ये तो 2011-2012 की मैं बात कर रहा हूँ आपको। 2012 और 2011 में इस पे जो मैंने मास्टर थीसिस लिखी हुई थी तो उसमें भी ये जिक्र कुछ ना कुछ मौजूद है कि जो डिफरेंट सैंपल प्रिपरेशन मेथड्स हैं उसमें जो हाइट ऑफ फॉल है वो रोल प्ले करता है, और काफी पेपर उसमें मौजूद थे। सर ठीक मैं है, तो इस सर मैं पल्वेशन की बात नहीं करता, मैं फर्ज करें मूल में हमने साइल डाल दिया, बिल्कुल लूजेस्ट स्टेट में डाल दिया ना मिनिमम में, हाँ ठीक है, और हर एक साइल का जो ना मैक्सिमम डेंसिटी भी होता है ना, अलग अलग होता है हर साइल का, हमने हाँ मिनिमम और बिल्कुल। मैक्सिमम मालूम कर लिए, तो फिर इस साइल पे हमने लोड अप्लाई किया ना वर्टिकली, हाँ बिल्कुल करते हैं। इनिशियल हाइट हमने मालूम किया, तो फिर लूट से जो ना उसमें जो ना हाइट में चेंज आएगी। वली यहाँ पे मसला आता है, ठीक है, वली यहाँ पे जो मसला हमारे पास आता है ना वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल हम कर सकते हैं, रिसर्च में हम जो मेथड्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्राइक्सियल स्पेसिमेन जब हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने जिक्र किया कि ये हमारे पास एक ट्राइक्सियल स्पेसिमेन है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ड्राइंग वेल, बट चलिए हम दूसरी जगह पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे अगर हम पास आ जाए, यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास अच्छा आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा थिन है लेकिन चलिए ये हमारे पास। अब आप कह रहे हैं कि हमने सैंपल बना लिया है, एग्री वली? जी मोल्ड सर में जी। हमने सैंपल बना लिया है, अगर हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे, पता है यहाँ पे इशू क्या आएगा? क्या इशू आएगा? अब ये जगह तो डेंसिफाई हो जाएगी, ये जगह डेंसिफाई हो जाती है, ये जगह जो है ना वो डेंसिफाई नहीं होती, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लूज रह जाएगी, सर और हमारे पास अल्टीमेटली सैंपल नॉन यूनिफॉर्मिटी मिटी आ जाएगी। जी बोले प्लीज। सर ये सवाल मेरे जहन में भी उठा था, लेकिन मैंने इस हवाले से ये सोचा ना कि एक तो हमारे साथ सैंपल ट्राइएक्सियल का मतलब 76 mm हाइट होता है, दूसरी हम दोनों डायरेक्शन के उसको कंप्रेस करें, तो मेरे ख्याल में एक हद तक जो है ना हम ये यूनिफॉर्मिटी इसमें हम ला सकते हैं, क्योंकि सैंपल तो इतनी बड़ी नहीं है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। वली आपने जो है ना लैड का पेपर पढ़ना है, ठीक है ना? 1978 में लैड ने क्या लिखा है? अंडर कंपैक्शन मेथड, ठीक है, ये प्लीज लिख ले, लैड का पेपर आपने पढ़ना है इस पे। उस पे उसने लिखा हुआ है कि अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर में दिखते हैं, फिर उसके बाद टैंपिंग करते हैं, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर की जो लेयर डालते हैं, फिर उसके बाद टैंपिंग करते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर की टैंपिंग की जाती है, फिर 2 सेंटीमीटर की टैंपिंग की जाती है, और फिर 2 सेंटीमीटर की टैंपिंग की जाती है। अब इसके लिए फिर पता है क्या किया जाता है? इसके लिए फिर सीटी स्कैन्स की जाती हैं, सीटी स्कैन्स, और मैंने की भी है। सीटी स्कैन जब आप करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसकी डेंसिटी क्या है। दूसरी ये कि इसमें एक बड़ा सीपीटी चैम्बर था, सीपीटी चैम्बर है, तो सीपीटी चैम्बर में हमने इस तरह किया था कि इसमें छोटे छोटे कैन्स रखे थे, क्योंकि वो थोड़ा उसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा थी,
तो देखिए रिसर्च में कोई चीज जो है ना फाइनल नहीं होती, वी कैन डेफिनेटली ट्राई, वी कैन ट्राई द एयर पल्विएशन, ठीक है, मेथड भी हम उसके ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके अंदर हम सी डी टेस्ट लेट सपोज करते हैं, फिर मॉइस्ट टैंपिंग करते हैं, फिर हम उसके ऊपर सी डी टेस्ट करते हैं जो बाकी पैरामीटर सेम रखते हैं, फिर हम जो है ना इसके साथ वाटर पल्विएशन करते हैं। एक ऐसा मेथड भी है कि इसको सब्र करें, इसको आप इस तरह कर लें कि ये जो है ना मोल्ड आपने रख लिया, इसके अंदर पानी डाल दें हाफ पे, 50% जो है ना आप इसके अंदर पानी डाल दें, फिर आपने बाकी जो है ना वो एयर पल्विएशन जो है ना वो वैसे ही करनी है, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ से जो सैंपल बनेगा। तो ये इसको वाटर पल्विएशन है, और इस पर भी काफी रिसर्च मौजूद भी है कि वाटर पल्विएशन से रिजल्ट कैसे आते हैं, एयर पल्विएशन से कैसे आते हैं, और मॉइस्ट टैंपिंग से कैसे आते हैं। मॉइस्ट टैंपिंग जो है ना वो बेसिकली लैड का 1978 का पेपर आप पढ़ें अंडर कंपैक्शन पे। अंडर कंपैक्शन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपैक्ट करें, फिर थोड़ा सा ज्यादा करें, फिर थोड़ा सा ज्यादा करें, फिर थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा टैंपिंग यहाँ पे टॉप पे करें, क्योंकि ये जो लेयर है ये जो टैंपिंग हो रही है ये यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रही है, ये जो टैंपिंग हो रही है ये यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रही है, फिर यहाँ की जो टैंपिंग है वो यहाँ पे भी ट्रांसफर होगी, और यहाँ की जो टैंपिंग है वो यहाँ पे भी ट्रांसफर। सो इट्स all these methods are trying to achieve a uniform sample। आइए समझ मेरी, और इसमें हम रिसर्च के लिए ओपन है। आप थोड़ा बहुत इसको परफॉर्म करें, थोड़ा बहुत इस सेटअप को समझें, थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च की बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी अवेलेबल है, और इस पे इंशाल्लाह हम रिसर्च करेंगे भी, थोड़ा सीखें इसको। और सर एक हाँ जी पूछे प्लीज। सर ये हम सैंपल को फर्स्ट करें फुली सैचुरेट करें ना, फुली सैचुरेटेड से मुराद ये मतलब ये है इसमें पानी आ जाएगी ना, तो पानी जो है ना वो लोड जो है ना वो इक्वली तकरीबन ट्रांसफर करती है सर, एक डायरेक्शन अच्छा बोली, वी आर इन द पोस्ट ग्रेजुएट नाउ, जब भी हम पानी पूरा डाल लेते हैं ना तो 100% सैचुरेशन हमें नहीं मिलती। हम कंसोलिडेशन में पानी जब डालते हैं हम कहते हैं कि ये 100% सैचुरेट हुआ है, जब तक हम CO2 को फ्लश नहीं करेंगे, जब तक हम बैक प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमें ये 100% पता नहीं चलता कि ये सैंपल 100% सैचुरेटेड है। लेकिन मैं एग्री करता हूं, इफ वी इंक्रीज द वाटर कंटेंट देन वी कैन कंप्रेस द सॉइल। सर यही मैं कह रहा था सर। आई गॉट इट, ठीक है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया, आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि हम अंडर ग्रेड में नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट में आ गए, तो इसलिए ये जरूरी है। अगर आप पानी उसके अंदर डालते हैं तो 100% आपको सैचुरेशन नहीं मिलती, उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, फिर भी पोर्स के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी गैसियस मटेरियल जो है ना वो एयर प्रेजेंट होता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ बैक प्रेशर ही निकाल सकते हैं, और बैक प्रेशर का काम ये होता है क्योंकि आपको जो है ना ये सैचुरेशन प्रोवाइड की जाए। चले 0.5 मार्क्स आपको मिल गए अगर आपने ये लिख लिया। थैंक यू सर। और सर यस प्लीज। सर ये मतलब ये ना कि हम ट्रायक्सियल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा तैयारी का दौरान ये है ना, तो अब ये जो सैचुरेशन प्रेशर अप्लाई करते हैं क्योंकि एक स्टेज पे तो सैंपल सैचुरेट नहीं होगी ना, तो कोई ऐसी मतलब लिटरेचर है कि हमें वो ये जो डिफरेंस होता है मुख्तलिफ सैचुरेट बैक प्रेशर का ना, कि हम फर्ज करें पहला कितना बैक प्रेशर लगाए दूसरा कितना, कोई इस तरह लिटरेचर पे मौजूद है सर? मैं दे रहा हूँ वली, सबसे जो है ना वो लिटरेचर भी इस पे अवेलेबल है, ठीक है, और मैं आपको जो है ना रफली कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, ये ट्राई करें क्योंकि हमने थोड़े बहुत इस पे रन किए हुए हैं, तो जब थोड़े बहुत इस पे रन किए हुए हैं तो आपको ये तो हो सकता है कि हेल्पफुल आए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ये हमने जो है ना क्या किया, इसको बैक प्रेशर को अप्लाई किया, मैंने आपको रिकमेंडेड वैल्यू क्या दी है 150 किलो पास्कल, ठीक हो गया जी सर। फिर जब आपने इस पे सेल प्रेशर अप्लाई किया तो फॉर एग्जांपल सेल प्रेशर हमारे पास आ गया 160 किलो पास्कल, 10 kPa से ज्यादा जाना ना जाएं क्योंकि फिर सैंपल कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, सेल प्रेशर है। अभी आपने करना क्या है, आपने लेट सपोज 5 kPa इंक्रीज करना है या 10 kPa इंक्रीज कर देना, चले ठीक है, आपने अगर इसको 10 kPa इंक्रीज कर दिया
तो ये कितना हो जाएगा 170 किलो पास्कल। और आपने क्या नोटिस करना है, या आपने नोटिस करना है पोर वाटर प्रेशर। एग्री? ये हमारे पास बी वैल्यू हो जाएगी। अब जब हमारे पास बी वैल्यू ये आ जाती है तो अब करते क्या है, देखते हैं कि अगर यहाँ पे आपको बी वैल्यू 0.96 मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके पास ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन जो मैंने बोला कि सजेस्टेड वैल्यू आपके पास ये है, तो वो मेरा जहन में सिर्फ यही पॉइंट था कि आपको खुदा ना खास्ता आपने फ्लशिंग सही नहीं की, क्योंकि अगर आप फ्लशिंग सही नहीं करते हैं CO2 से और वाटर से तो आपकी वैल्यू कभी भी 0.96 नहीं आ सकती। अभी आप क्या करेंगे, आप बैक प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसी स्टेज पे आप उसको बोलेंगे कि आप बैक प्रेशर को इंक्रीज करें। कितना? बैक प्रेशर को प्लीज इंक्रीज करें, सेल प्रेशर को प्लीज इंक्रीज करें। आपने कितना सेल प्रेशर, क्योंकि सेल प्रेशर को थोड़ा बहुत ये जो 10 kPa की इफेक्टिव स्ट्रेस है ना, ये स्टेबल भी रखता है। आप उसको बोलेंगे आप बैक प्रेशर को चले जाएं 10 किलो पास्कल, और बैक प्रेशर को बोल लें कि आप कितना हो जाए, आप 200 किलो पास्कल हो जाए। वही समझ आ रही है? सेल प्रेशर 200 kPa हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 200 किलो पास्कल हो गया, क्योंकि हम तो 170 से ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है। इसको आपने स्लोली एंड स्लोली रैंप करना है, ठीक है, स्लोली रैंप करना है कि ताकि कभी भी किसी स्टेज पे भी आपसे जो बैक प्रेशर है ना, जब बैक प्रेशर आपसे ज्यादा हो जाएगा सेल प्रेशर के, तो इसका मतलब ये है कि आपका सैंपल डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपका सेल प्रेशर थोड़ा सा भी जो है ना ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी बैक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो आपका सैंपल जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, 10 kPa का वो रखा हुआ है, इफेक्टिव स्ट्रेस रखा हुआ है। अब हम बी चेक के लिए क्या करेंगे, बी चेक के लिए हमने क्या करना है, बी चेक के लिए हमने 10 kPa इंक्रीज करना है। और जब इसको इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि डेल्टा यू डेल्टा सिग्मा 3 के साथ किस तरह करता है। फिर आपने देखना है कि 0.96 आता है या नहीं आता, ठीक है। डेल्टा यू को आपने मॉनिटर करना है कि इसकी क्या रीडिंग आती है। और सर फिर ये इक्वली मतलब सिमुल्टेनियस इंक्रीज करते हैं सर? ये मैंने आपको बताया ना कि GDS के सॉफ्टवेयर में इसको हम रैंप बोलते थे। अपने ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आपने मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये रैंप जो है ना, स्लोली स्लोली आप इस तरह करते हैं कि आपने इसको रैंप, अब ये यहां से यहां तक वैल्यू है ना, हम इसको कहते थे कि ये आप 1 घंटे में 60 मिनट्स में आप 200 तक पहुंचे। 60 मिनट्स में 200 तक पहुंचने के लिए आपने 1 मिनट में कितना kPa आप इंक्रीज करते थे, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से कितने मिनट में या कितने kPa पर मिनट, इतने kPa पर मिनट जो है ना ये इंक्रीज करते थे हम स्लोली एंड सॉफ्टवेयर या जो पंप है ना वो उसको इंक्रीज करता जाता था। और ये हमारे पास मिनट में, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने इन दोनों को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि आपने सैचुरेशन को ऑब्टेन करना है। एक दम से आप अगर एब्रप्टली आप इसको 210 kPa पे लेके जाएंगे तो उससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। और फिर आपने उसको थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़ना भी है कि वो जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर है, उसको कंप्रेस किया जा सके जो प्रेजेंट थे, इवन दो कि आपने उसको फ्लश भी किया है CO2 से, फिर भी आपको जो है ना आपका टारगेट अचीव नहीं होता। तो इस चीज को आप रिपीट कर सकते हैं। इसी स्टेप को आपने फिर रिपीट करना है कि सेल प्रेशर आपने लेके जाना है लेट्स सपोज 260 और बैक प्रेशर आपने लेके जाना है कितना 250, और फिर आपने बी चेक करना है और देखना है कि डेल्टा यू डेल्टा सिग्मा 3 के साथ कैसे चेंज होता है। इफ इट इज equal to 0.6 or greater than 0.6, so you are good for the next stage which is saturation. आइए समझ वाली। यस सर, समझ आ गया सर। और कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में? आपकी अटेंडेंस लग गई है, कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, वरना हम 5:30 तक बैठे हुए हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए।
I will share the recording as soon as possible. It is processed so that other students who is having the internet issue, so they can also watch the video as well. Thank you very much, students, for listening very patiently and for the active participation in the class. You can leave the class if you want to leave. Thank you so much. Allah Hafiz.